हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इन माय ओपिनियन बाय समक्ष मल्होत्रा। अगर आप ट्रायल बाय फायर की ओरिजिनल स्टोरी जानना चाहते हैं कि कैसे ये सारा इंसिडेंट टुक प्लेस, क्या क्या ट्रायल्स हुए थे, कौन कौन इन्वॉल्व थे इसमें, केसेस की वर्डिक्ट कब कब आई, कौन जेल गया कौन नहीं गया, देन इसकी पूरी डिटेल्ड स्टोरी मैं यहाँ बना चुका हूँ ऑलरेडी व्हेन वी डिड द ट्रेलर रिव्यू ऑफ दिस सीरीज। और आज जब मैंने ये सीरीज देख ली है फाइनली, वी विल बी रिव्यूइंग इट जस्ट फॉर यू। इफ यू वांट टू नो कि ये सीरीज कैसी है, क्या आपको इस 7 एपिसोड सीरीज को देखना है इस वीकेंड पर या नहीं, डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड ऑल्सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज ये सब वीडियोस आप ही के लिए तो मैं बना रहा हूँ। सो दिस 7 एपिसोड सीरीज इट कैप्चर्स द सबटिलिटी एंड द पियर्सिंगली द ट्रॉमा ऑफ द टफ एंड टेनेशियस दिल्ली कपल जिन्होंने अपने 2 बच्चे खो दिए थे उपहार सिनेमा फायर में ऑन जून 13th 1997। और उसके बाद काफ़ी लॉयर्स के सपोर्ट के साथ, रिलेटिव्स के सपोर्ट के साथ, और जो भी लोग उसमें घायल हुए थे, जो जिनकी जान गई थी आफ्टर द फेटफुल आफ्टरनून, दे फॉट टूथ एंड नेल टू ब्रिंग द रिस्पॉन्सिबल ट्रेजेडी टू बुक। ट्रायल बाय फायर जो है बहुत इंटेंस ड्रामेटाइजेशन है ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्सीडेंट जो अकर हुए थे दिल्ली में, एंड इट्स एन इंक्लूसिव पोर्ट्रेयल ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द विक्टिम सुपर हेडेड बाय कृष्ण मूर्तिज एंड ऑल्सो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल स्टोन वॉलिंग, wielded threats, financial inducements and tampering with evidence as well. The powerful owners of the cinema hall resorted in order to save their skins. Okay, तो सीरीज फर्स्ट एपिसोड से काफी ग्रिपिंग है, लेकिन कुछ एपिसोड्स के बाद when the story progresses, it seems to lose track, but it comes fully back in the last episode when we feel कि वहाँ पे स्टोरी फिर से वापस आ चुकी है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाए हैं, talking about a few that there's a police officer who refused to file the FIR in the first place for the longest of time. You know, वो एकदम uncaring officials है स्टेट के, owners of the theater सुशील एंड गोपाल आंसल, जिन्हें you know जो आधा दिल्ली ओन करते हैं, the big law firms जो रिफ्यूज कर देते हैं to even touch the case, the enormous difficulties जो ordinary citizens को फेस करने पड़ते हैं at every step जब वो ऐसे कुछ जर्नी पे, ऐसे स्टेप्स पे embark करते हैं। It comes in the form outrightly violent intimidation, apathy and betrayal by those considered close, जो perhaps बहुत worst होता है for the people who are involved in all of these. That's what all is there in the series. लेकिन अगर हम characters की बात करें, starting from of course अभय देओल का तो of course कोई जवाब नहीं है, we've been loving him since his series that have been come on OTT platforms, पर यहाँ पे जो देश पांडे हैं उनका interpretation of a determined distraught mother जो unfair और loophole ridden system में फंस चुकी हैं, you know, in the trial by fire, वो एकदम अनमैचेबल है। शी आर्टिकुलेट्स अ रेंज ऑफ इमोशंस, चाहे वो शॉक हो, ग्रीफ हो, यू नो, इंडिग्नेशन हो, फॉर्टिट्यूड हो, और कभी कभी ये सब इमोशंस बिना कुछ कहे भी वो कैमरा पे दिखा देती हैं। एंड कैमरा इज फ्रीक्वेंटली फोकस्ड ऑन देश पांडे's फेस विच मैप्स बोथ द बेरीवमेंट एंड ब्रिस्लिंग एंगर विद इक्वल फोर्स। अदर देन नीलम एंड शेखर हमें और भी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। एक टेक्नीशियन है विच इज प्लेड बाय राजेश डायलांग हु इज अफेक्टेड बाय दिस tragedy. Since he's made into a scapegoat, you know, his experience of the tragedy is very different from that of the parents. Then there's an elderly man who has lost his entire family, but he can't even afford the funeral rites. It's interesting and unsettling realizations. I'm getting goosebumps as I speak of it, that we've developed empathy already for a lot of people who we don't even know while watching this film, and we know for a fact that it's a true story. Apart from all the real characters, there are several fictional characters as well in this series so that it could have been more dramatized. But the stories of some major fictional characters seems incomplete in between, or they may not have been explored to their fullest. जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं बाय अनुपम खेर हो, चाहे रत्ना पाठक शाह हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट देम व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द 5th एपिसोड, यू थिंक दैट दे आर लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर एंड हिज फैमिली। जो कैप्टन भिंडर थे, ही गेव अप हिज लाइफ, दोज ऑफ हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू सेव अदर 150 पीपल। Moreover, one would expect that a character like this one is played by Ratna Pathak Shah would have joined ABUT and played a significant role in it, but that doesn't happen. Similarly, Shilpa Shukla जो है, she is playing a seemingly considerate neighbor and a friend in this series and a friend in need of the Krishna Murthis, but she disappears from the story right after some startling revelations about her.
Why did that happen is still something that I'm not sure about. क्या second season भी आ रहा है जहाँ पे हमें काफ़ी incomplete चीज़ें पता चलेंगी? We don't know yet, right? So इस series को कम से कम complete, if you've started a story, you have ended a story. That is something I tell to the writers. Now, continuing episodes, there's episode 6 which is telling the story of an electricity board worker who's made as a scapegoat in this case, and that's also very chaotically edited. It has so many time jumps that the viewer loses after a point. However, series redeem itself in the finale episode, which is shown the tragedy being played out. Its execution is so good at times that you might find yourself choking and gasping for breath. Although the end could have been a little less abrupt. एकदम से ये ending पे ले आए. The last episode जितना अच्छा बनाया वो same scenarios वो last 2-3 episodes से build up करते हुए ला सकते थे. The end could have been a little less abrupt. लेकिन एक sense of closure जो है वो कृष्णा मूर्ति और बाकी AVUT के members को जो मिल जाता है, while also making it clear that the fight over the larger issue जो है वो फिर भी continued रहेगी. While the show does suffer its pacing towards the end, sometimes spending too long on an arc, Trial by Fire is one of the best examples of telling such a story. As ending credits roll, there is a deep unsettling feeling, and that is ideal because कुछ fictional characters यहाँ पे introduce किए गए हैं जैसे हमने आपको बताया, just dramatize किया जा सके. और overall अगर हम बात करें, this series picked up a sombre subject and tried to do justice with its portrayal. Acting performances are noteworthy, especially when we talk about Deshpande's representation of the mother's anguish and a helpless mother जो angry भी है, जो निराश भी है, who's endless quest for justice पे है. So that is one thing for which I think you all should watch this series. So yeah, if I would watch this series, it would definitely be for Deshpande, who's played the mother in this series. And if you watched the series already, let me know in the comments below कि आपको ये series कैसी लगी और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, वो भी मुझे बताइए ताकि we can make further reviews regarding the same. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, then do like it, and while subscribing to my YouTube channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next, you get the notifications first. Also, remember to follow me on Instagram and Twitter. The handle is SamakshVivo. That's all for the day. Signing off.